कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आप और अक्षय जोड़ी थे, राइट? कभी ऐसा हुआ जब सडनली आपने बैक सीट लिया एंड ही वाज डूइंग गिविंग द हिट्स, कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लगा कि यार शिट, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, और कहीं इनसिक्योरिटी आई? Of course. Hi, this is Suniel Shetty. Subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now and go check his bank balance too. में मैं नर्वस था, मैं पूछा तो लोगों से ये इंसान कैसे है, कैसे? दे सेड यार ये आ रहे हैं, यू गॉट टू बी प्रिम एंड प्रॉपर। ये आए स्टूडियो में एंड आई वाज अ नर्वस बॉय एंड ही मेड मी फील विद इन 2 मिनट्स कि ये मेरे बड़े भाई हैं एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। 22 years down the line, he's still my elder brother and one of the nicest people in the world. अन्ना, थैंक यू फॉर मेकिंग अ यंग गाय फील सो स्पेशल। हाथ तो दो। मैं आया था तेरा घर मेरे घर के टाइम पे, यू रिमेम्बर? और आज तू सबको हर चीज में बोलता है मेरा घर मेरा घर। इतने पैसे कमा लिए इसने, कमाल का है। बड़ा I'm happy for you। दादा, देखा जाए जैसे उस दिन मैं आपको फोन पे कह रहा था, राइट? मैंने कहा सुनील शेट्टी गायब थे, फिर सडनली सुनील शेट्टी 3.0 इज कम। जब आप इतने रेलेवेंट हो 2023 में, कभी आपने होप लूज किया कि शायद मैं इस जनरेशन के लिए रेलेवेंट नहीं रहूंगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि प्यार बहुत मिला मुझे। मैंने हमेशा कहा है कि प्यार बहुत है लेकिन गलतियां भी बहुत की। एंड आई थिंक 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होना भी पड़ा कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बदलाव है। ये जनरेशन गैप, मैंने हमेशा सोचा था कि वो जनरेशन गैप को अलाउ नहीं करूँगा मैं टू टेक ओवर, इसलिए मैं हमेशा आतिया और आहान का सुनता रहा, एंड was always their best friend। और उस वजह से कहीं ना कहीं वो रेलेवेंसी वो आज की सोच रही। आया पैंडेमिक, आई थिंक वो 3 साल जब हमने सब रियलाइज किया कि हेल्थ इज व्हाट वेल्थ एक्चुअली इज, एंड फैमिली इज अगेन, एंड फ्रेंड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो आई थिंक सबका फोकस वही था और वही उभर के आ रहा है। नहीं, ये मैं मानता नहीं हूं। मुझे लग रहा है आप सही नहीं कह रहे हो कि पैंडेमिक, आप हमेशा ऐसे थे, यू वैल्यूड पीपल। Yeah, true. When I was starting off, maybe I had nothing to offer you, Anna. I genuinely had nothing to. What could I have offered you? Even now, maybe not. I can give you a lot of love and a little bit of views, but you never were like that. And most importantly, you were always open अपने limitations के बारे में, अपनी कमियों के बारे में। आपने कहा mistakes, वो कौन से 3 mistakes हैं जो आज तक आप जिंदगी भर याद रखेंगे? Even when Anna becomes 90 years old, you'll remember those mistakes. I think कहीं ना कहीं work, काम के अलावा कुछ और था ही नहीं। Work was worship and work was the number 1 priority. I think कहीं ना कहीं वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है between family and work। आपने नहीं रखा था? नहीं रखा था, क्योंकि जब पिताजी बीमार गिरे तो तब मुझे सिर्फ वही दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी होगा कि आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई सेड नो, आई नीड टू गिव हिम टाइम। तो वो गिल्टी होगा ना कहीं ऑक्यूपाइड विद वर्क, शूटिंग 24/7, फेलियर हुआ तो उसमें हमारी सोच में, सक्सेस हुआ तो हमारी बारे में सोचते हुए, आई थिंक you make those mistakes though the intention is not there। तो work, so I think one should prioritize work and family। दूसरी, बहुत ही इमोशनली मेरी जर्नी बहुत ही इमोशनल रहा है। मैंने I think out of the 130 films I did, I think 75-80 were with absolute raw newcomers। खराब बात नहीं है ये, लेकिन कभी कभार है ना, ये कमर्शियल वर्ल्ड में न्यूकमर्स को प्रोड्यूसर्स जो है उतना ही देते हैं जितना उनको लगता है उन्हें देना चाहिए। ओवर एंड अबाउट दैट नहीं देते, बिकॉज प्रॉफिट इज एवरीथिंग फॉर देम। और इन बच्चों के पास वो ताकत नहीं होती कि वो स्केल में फिल्म बनाने की या वो मार्केटिंग करने की। तो समवेयर डाउन द लाइन आई लेट इमोशंस टेक ओवर एवरीथिंग एल्स, एंड दैट इम्पैक्टेड मी। थर्ड, कहीं ना कहीं मेरा फोकस शिफ्ट हो गया क्योंकि I started believing that नहीं यार ये चली है तो ये भी चल जाएगी।
मुझे माइक्रो लेवल पे भी फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी था, जो आज के तारीख में फिल्मों के लिए बहुत ज़रूरी है। बीच में वो फोकस फिल्म चला गया? फिल्म्स के लिए नहीं, क्योंकि इतना कर रहा था कि वो वक्त ना रहा, ना वो एनर्जी रहा, which happens, you know, the lethargy of what you're doing creeps in. I think all these things crept in, and I didn't market myself. You know, I never celebrated my success. आज सक्सेस को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, दुनिया को ये बताना कि you know, ये मेरी चली हुई है और मैं खुश हूँ और आप भी मेरे लिए खुश होइए, ये ज़रूरी है। I moved on to the next one, और आप देखते ही हो कि सक्सेस और अच्छाइयों के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। टीआरपीज़ वहीं मिलती है जहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ कुछ ना कुछ आप गलत करते हो, तो हो वैसा गया है। तो आपकी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके फेलियर के बारे में तो ढिंडोरा पीट कर लोग बोलेंगे ही। आप इनफैक्ट अंडरस्टेटेड थे अपनी सक्सेस के बारे Yes, में। always. कोई सक्सेस के बारे में बात करता है, आप कॉन्वर्सेशन चेंज करके कुछ और कर देते थे, राइट? Yes, very true. फाइनेंशियली भी यू वेंट थ्रू अ टफ टाइम, बिजनेसेस थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई थी, राइट? गड़बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन you know, फोकस ही नहीं रहा ना। So when your focus is not there, you end up losing. But for me, that is genuine learning. You know, for me, learning is failure and learning is appreciation. Appreciation in the sense, मुझे अगर आप में कुछ अच्छाई दिखाई दे and I see the good side of you, मुझे सीखना बहुत मिलेगा। जिस दिन मैं आपके बारे में नेगेटिव सोचूं, आपसे लेने के लिए मेंटली मेरा ब्लॉक हो जाएगा कि इससे लेना है क्या, अच्छाइयाँ नहीं है इसमें, मुझे सिर्फ बुराइयाँ दिखाई दे रही है। So I'll start hating you, and hate is what doesn't allow you to appreciate someone. Have you at any time felt hate from the business? Because at one time you were a hit machine too, right? Right. लोग कहते थे यार सुनील शेट्टी तो सिर्फ एक्शन कर सकता है, and you came and did your Hera Pheris and you were killer and straight faced humor as well. Yeah. कभी was there a point जब आपको लगा इंडस्ट्री में कुछ लोग did not want you to succeed? Honestly, No, never. I think I got all the love and support, और आज भी अगर इंडस्ट्री में हूँ तो मीडिया के प्यार के वजह से, लोगों के प्यार के वजह से। जब आप सक्सेसफुल नहीं रहते हो तो शायद लोग आपको काम नहीं देते, लेकिन आपके बारे में आपकी बुराइयाँ कभी नहीं करेंगे। और जैसे ही आपके लाइफ में सुधार आती है तो कहीं ना कहीं वो अपना हाथ, नॉट टू राइड ऑन द सक्सेस, बट वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं यार, मैं भी समझता हूँ। तो somebody is willing to invest money into you then, you know, and that's what you want. ठीक है यार, my time is good, let's do things together, which is fine, and that's the real world. And whoever believes कि उसके अलावा भी कुछ और है, वैसे कुछ होता ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आप और अक्षय जोड़ी थे, राइट? कभी ऐसा हुआ जब सडनली आपने बैक सीट लिया एंड ही वाज डूइंग गिविंग द हिट्स, कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग आपको लगा कि यार शिट मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, और कहीं इनसिक्योरिटी आई? ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि अक्षय ने और अजय ने हमेशा इंस्पायर किया, you know, कि लगातार हिट्स दे रहे, लगातार you know, ऑडियंस के नज़रों में प्यार बढ़ता जा रहा है, लेकिन तब तक मैंने गलतियाँ इतनी कर दी थी कि ढंग का काम ही मिलना बंद हो गया था। You know, it was small characters that didn't mean anything, and when that happened I always started saying no. तो अगर मैं ना भी बोलता तो लोग बोलते यार उसको काम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि like I said कि आप जब किसी चीज़ के लिए ना बोलते हो तो लोग बताएंगे नहीं कि ना बोल रहे, बट they'll say यार you know फिल्में ही नहीं मिल रहा। तो I think that is the only part of our industry that where we need to be really strong, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल होते ही अपने आप को completely छोड़ देते, गिव अप कर लेते, which is not right. 61, right? Or 60? Age? Huh? I'll be 62 this year. 62 per, standing tall. They say that if you do interviews with Anna, the youngsters watch you on YouTube. Do you know this? People like to take life lessons from you. I'm telling you an analogy. Right. When आपको phone नहीं ring हो रहा था, was there any point कि आप break down हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, because there's so many opportunities that God has given me, not here, business, कहीं ना कहीं मेरा घर चलता रहा, और जब आपका घर चलता रहा, फाइनेंशियली आप सिक्योर हो, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ वैसे कुछ नहीं, जब आप सिक्योर हो, you don't need to worry. And I'm someone who never worried about wealth, who was never worried about wealth. मेरी wealth थी मेरी family, my Tia, my Han, you know, Mana, my mother, my absolute strength, my sisters, we are very, very close.
And when you come from such a close-knit and a strong family, I think ये डिप्रेशन और ये डर और फ़ोन का ना बजना, मैं उनमें से हूँ जो फ़ोन नहीं बजे तो अच्छा है यार, फैमिली के साथ। हाँ चल जाता है। आधे टाइम तो वैसे भी फ़ोन, अगर फैमिली के साथ हूँ तो फ़ोन उठाता भी नहीं हूँ, you know, I will reply every call though, but nah, never bought. जब आथिया की शादी हुई, मैंने आपको बोला था फोन पे भी कि आप और आहान बाहर आए थे, जी। वेष्टी पहने थे, हमारे जी। तमिल में वो कहते जी। हैं, एंड द वे यू बाउड डाउन इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, और वही ह्यूमिलिटी मैं आहान में देखता हूँ जब मैं उनसे बात करता हूँ, एंड आई saw that same thing in आथिया as well, and your Right. wife as well, including your managers like विजय and everybody. ये कहाँ से आता है? ये माँ बाप से आता है, ये अपब्रिंगिंग से आती है? ये inherent human being so humble is not fake. I see a lot of stars being fake about it. You're not. माता पिता और अपब्रिंगिंग, you know, कुल जो बार बार हमें मैंगलोर लेकर जाता है, आई थिंक वहाँ की सिंप्लिसिटी, वो कुल की ताकत, माँ बाप के यू नो पेरेंट्स, आशीर्वाद माँ बाप का। और घर में आज भी आप घर चलो और माँ को देखो तो आपको लगेगा कि शी इज़ जस्ट लाइक एनी अदर अम्मा, you know. And I think that children watch and learn and not listen and learn. तो जैसे वो बिहेव करते, मैं भी शायद पापा को देख के वही सीख के आगे बढ़ा हूँ, and nothing else. और जो दुनिया के लिए शायद उनको लगे कि वेरी हम्बल, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज द वे टू बिहेव. आई डोंट नो एनी अदर वे, एंड आई जेन्युइनली डोंट नो एनी अदर वे, यू नो, कि हाउ आई वुड बिहेव विद एनीबडी लाइक एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वुड. और वही तो आहान कर रहा है, वही अत्या भी कर रही है. एंड यू नो, फिंगर्स क्रॉस्ड, आज ऊपर वाला has been so kind. You get somebody coming into Atya's life and he's the same kind of a personality, you know, quiet, humble, and success, he will thank you. Failure, he'll stand alone and want to fight back. Blessed. केएल राहुल जब उनका परफॉर्मेंस नहीं चल रहा था क्रिकेट में इतना अच्छा, क्या उन्होंने आपसे बात की उसके बारे में? नहीं, हम लोग फेलियर के बारे में या नॉट डूइंग वेल के बारे में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि they are fighters. We show more love. We talk about everything else in the world and try to take your mind off that, so that what you can do is focus. I can't teach KL Rahul how to play cricket. He's playing for the country. He's not playing for gully cricket. Or building cricket. For somebody to, you know, comment and say कि वैसे खेलो वैसे खेलो. मैं अगर बोलता तो गली क्रिकेट की बात करता. And I can see a young boy going through tough times, but willing to stand up there and realize and work hard. और बात क्या करेगा, बल्ला ही बात करेगा, बाकी तो बात करके फ़ायदा ही नहीं है. ये फिल्में नहीं है कि हम फिर भी एज अ टीम वी कैन गो आउट देयर. ही हैज़ टू गो आउट देयर, स्टैंड देयर, फेस दैट बॉल एंड प्ले, एंड ही विल, एंड ही कंटिन्यूज टू डू दैट. महीने के 1% पेमेंट प्लान में अपने खुद का घर, और वो भी दुबई में. हाँ एब्सोल्युटली भाई, ये नॉर्मल घर नहीं है, 30+ एमिनिटीज वाला घर, और साथ में गोल्डन वीजा भी. अरे मामू बना रहे आप? नहीं भाई, मामू नहीं बना रहा हूँ. अब आओ तो सही दुबई, देखो मैं देता हूँ कि नहीं आपको. जंबे आप तो जादूगर हो यार, एक जादू की झप्पी बत्ती है. हो जाए भाई. आपकी माता जी को मालूम है कि अब कैसे सुनील अन्ना OTT हंटर हो या कोई और प्रोजेक्ट में इतने ट्रेंड सेटिंग इंसान वापस बन चुके? इज शी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स? She is, because she reads and she hears. So there's a lot more that is available to them than earlier, you know, and she can do everything from the comfort of her own home. So she has her assistants who help her with by showing her everything and talking to her about everything. And I can see a happy mother, a content mother, you know, and who always wishes well. क्या वो कभी अनहैप्पी थी आपसे कभी भी? कब? नेवर. लेकिन दुख तो होता ही होगा ना, when जब दुनिया बोलती है कि यार आजकल सुनील फिल्मों में नहीं आ रहा है, you know, so you don't have to tell someone कि काम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिल्मों में नहीं आ रहा है मतलब काम नहीं मिल रहा है. So I'm sure she's gone through a bit, but I think her joy is that her son still lives with her. You know? You'd live with her? Yeah. You meet her every night? Oh, my morning chai is with her.
my dinners with her, and she lives. We live with her. My children and me live with her. So she's the big boss of the house. So rather than me enjoying my success here and my mother in some village somewhere else, or me in my penthouse and my mother in some corner of the city, no, she's with me, and I'm with her. So I think that's her biggest high. You're making me think a lot right now. You know, my parents, my amma are based in Bangalore. Yeah. They don't want to come to Bombay because, you know, Bangalore is more freer. यहाँ पे थोड़ा claustrophobic हो जाता है, traffic. And I've been contemplating to get them here. And now that you've said that, what is the point of them enjoying my success somewhere else? They should be here. Absolutely. So thank you. Maybe that was the main reason I did this interview with you. Yeah, sure. And I'm telling you, and not you, I think the children will benefit 10 times more than that. Right. क्योंकि हर एक को एक चीज याद रखना, मूल से सूद प्यारा होता है. तो आपसे प्यार करते ही होंगे माँ बाप, लेकिन वो जो सूद है ना, जो इंटरेस्ट है, that is their only interest. There's nothing else in life. You'll see them glow and you'll see the children in them come out. You'll see them more active, whether it's wanting to drop them to school or wanting to solve their problems with anything, or talk to them about festivals, about lights, about weather, about animals, about something or the other. And I think that's the biggest high. And Bangalore mein ghar hai, they can go whenever they want. But that should be their second home. This should be their first home. Hunter mein, I thought your look was very lethal. Long hair, silver streaks, fit, dialogue delivery very, very strong. And so many back-to-back projects coming up. If there's one thing जो आपने पिताजी को आप कहना चाहते थे और शायद नहीं कह पाए, वो क्या था? No, I think मैंने हमेशा डैड को सब कुछ कहा, but I think I'll say कि you know, thank you for continuously taking care of me. मुझे हमेशा लगा था कि you know that roof is off now and I'm alone, but somewhere down the line I'm very clear that he's there watching me. You know, आज भी मेरा DP वही है. I see that. So every time my phone is on and if there's a message, it's he who's looking at me. So I'm very clear. In fact, देखा जाए, you'll never be alone. देखो क्या है, hits होते रहते हैं. Yeah. But you know, one sec. But the fact that people just love you. It could be a driver. It could be me. We love you. Whether you do a film or not, everyone wants to be a better human being because of you. Thank God. Yeah. So, Hunter, you've done the music too, right? You've been involved in the music? Yeah, I mean, I stole the music from Saregama. Naughty boy Anna? I was the jewel thief, you know, and forced them to give me the best of music. But then what's the point of being a part of the Saregama family? So they're going to be in big trouble because everything, my biggest problem now is anything that comes my way, you know, and I feel, why can't you join hands with Saregama and do this? You know, so that's the new mantra, because I want the team, I want the music, I want everything they have. See the team. Brilliant. I think Sanjeev is blessed that that's the first thing I told him. And I think the second day or the first day he messaged me, Suniel, our Hunter is... So I said, Sanjeev, really? He's looking into all this? So then I told him, I said, you know what you should be excited about is the fact that you've got a mind-blowing team. I'm going to tell you one interview that came out. I'm going to quote unquote, react the way you want. Shabir Box wala? Yeah. उन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा मोहरा फिल्म प्रीमियर. Right. उन्होंने कहा कि अक्षय शायद फैमिली के साथ आए और उन्होंने आपको देखा स्क्रीन पर और वो खुद हिल गए थे आपके प्रेजेंस से. बाद में शबीर ने उनको बोला कि देखो तू चीज बड़ी है, मस्त है, you'll do a lot of shows Akshay, you'll stand out. But even Akshay got shaken on with your presence on the screen is what Shabir says. Did you ever give these things importance? No, never. I mean, today Akshay stands there and I feel, you know what, there is reason to continue. There's reason to push. You see a Bhola or you see Ajay's success with Drishyam and everything and you feel, wow. In fact, you're a team player. जब बातें हो रही थी कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आ रहे, आपने कहा I want to understand the situation. आपने अक्षय को फोन घुमाया. Did you make it happen, getting all of them together, Anna? Honestly. No, Akshay and me always spoke about it. We always wanted it to happen. Whatever reasons it wasn't going through, you know, Akshay's character could never be replaced.
Raju, they could be nobody else who's Raju. You know, Karthik could have played another character who's as important or maybe the most important, but Raju will always remain Raju. And finally, whatever jugaad you try and do, only the principal characters work. Yeah, Raju, Sham, Babu Bhai, you know, Omji is no more, but all these characters are the ones who will stay relevant. बहुत बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन करना पड़ा अक्षय टू गेट हिम बैक ऑन द प्रोजेक्ट. वो आई थिंक फिरोज से पूछना पड़ेगा आपको कि लंबा कितना था, चेक बड़ा कितना था, बाकी आई डोंट नो. No, kidding. Just, but Firoz and Akshay, probably worked on it and so. But you gave it a shot too, right? Of course. Why would I not want Akshay to be a part of the film? So also Paresh ji, was very keen that it has to be the trio. In fact, Popcorn जब आई थी, बहुत से लोग ने ट्विटर ट्रेंड स्टार्ट किया था कि फहाद सामजी को आउट करो हेरा फेरी से. Were you aware of it? Yeah. Twitter is a relevant medium, but I also believe that everybody brings their luck, their efforts into a project. I've never worked with him as a director, but I know him as a very, very good writer. And when the team believes that he's fine, you go with the team. And you believe in it too? Yeah, absolutely. एक और चीज था, you had the courage to understand the vision of South films. आप South जाके films करने लगे, और अब लोग कह रहे South films. Yeah, see, for me, I was the one who always did a lot of South remakes also, because I believed in their content, I believed in their sincerity. Writers write, and all we have to do is probably get inspired from them and get back to the drawing table. Sit down, write good content, choose the right kind of subjects, invest in the right places, invest in content and not necessarily the actors. I think somewhere down the line, the actors' pricing went haywire. Actors have to be a partner in a project. Then make the amount of money you want to make. But also we make sure that there is a cushioning for the producer, from a safety perspective. He shouldn't be able to, he shouldn't be knocked out of business completely. So I think all these things are happening, and that's why things are looking better, brighter, films are working. Shah Rukh Khan was invested in Pathaan, yeah. So how? Ajay is invested in Drishyam, he's invested in Bhola. So it will work. Do you think ये जो rumors थे कि Akshay wasn't happy with Hera Pheri 3 script, was that true? No, I don't think so. I don't know that part of it at all. I think there were no script discussions. It was probably, the entire working, which is important, which the producer needs to be very, very clear about. It's not Akshay who delayed Hera Pheri for 16 years. Firoz Bhai went through a lot in life, and you wish him well. I love the man. And probably it's because of that. We actors had nothing to do with Hera Pheri 3 not happening. Last 30 seconds, Sitke ka अंगार. एक एक्ट्रेस जिसके साथ आप चाहते हो कि यार ये एक्ट्रेस के साथ एक बार तो काम करना चाहिए, वो कौन है? ऐश्वर्या राय कहूँगा, क्योंकि 2 फिल्में की और दोनों डब्बे में रह गई है. So I would always want the most beautiful woman in the world. I had done 2 films with her, Radhesham Sitaram, which was Anees Bazmi's launch film, and Sashilal Nayar's Hum Panchi Ek Dal Ke. Huge films, 99% complete. Producers mein jhagda, and I never got to had a release with Ash. One contemporary actor जिसके career graph से आप बहुत inspired हो? अक्षय, अजय, मैं बहुत सारे बोलूँगा. खास अक्षय, अजय, सलमान, they keep growing, have made such a big difference to the industry itself when it comes to revenues, inspirational. Tabu, Shilpa, Ravina, Karishma, the one actor friend जिसके साथ आप touch में हो? I think I'm in touch with all of them. अरे ladies man अन्ना. Yeah, touch with all of them in the sense, we wish well for each other. The families know each other, and if there's anything that we can do for each other, that we are a phone call away. Shah Rukh Khan को कहा जाता है the last superstar of this generation.
Do you believe in that statement? He is a superstar of this generation, maybe, but you never know what's up next. You know, there are a lot of the young kids, and there's Aryan. There's so many of them. Tiger ya Vidyut, the bigger action star? For me, Tiger, because he's my baby. Vidyut is phenomenal, but Vidyut, you need to shoot Vidyut right. Vidyut hasn't been shot the way he could be shot. He's insanely superb. He's insanely brilliant. And I mean it. Probably one of the best in the industry so far. You know, but he needs the right director. He needs Prince of Hunter. Anna, before I sign off, I'm just going to say one thing. You shaped a lot of me in 2001. I realized the value of people because you made me feel special when I was very, very young. People can find stars, superstars, but आप जैसा human being पाना बहुत कम है. Thank you, Sid. Thank you so much. And I mean that from the bottom of my heart. Thank you. And the fact that in 2023, when you're 61, we are chatting, I have a feeling 2033 में भी अन्ना हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ? And you're still going to look awesome. You're still going to be a great guy. And you'll still have the world backing you up. No one can hunt a good human being like you. You're the king of the jungle. Thank you. Thank you. Suniel Shetty. And he'll probably have 10 homes in the new constructions that are coming. Okay, so keep watching for all the homes and CBI, ED, check. एक लाइन अरे इसका खुद का है वो काट डालेगा बहुत चालू है. Keep it up. Yeah, promise.